Now we are going to discuss about the religion, minority and cultural and educational rights. First we have discussed, अरे ने पहला टॉपिक डिस्कस किया क्रिमिनल जस्टिस, दूसरा उसी से कनेक्टेड है, that is child exploitation, child labor. Now third we are going to discuss religion, minority, cultural and educational rights. Now religion, minority and cultural and educational rights. Now, if I ask you, what are the sources of religion, minority, cultural and educational rights? Tell me, sources क्या है? What are the sources where religion related provisions are given? बताइए. Article 25, okay, then Article 26, Article 25 to 28, Preamble, okay, 28, ठीक है, okay, 29, 30, Cultural Minority Institutions, okay, very good. और okay, ठीक है. अब सबसे पहली चीज समझिए. The first thing is preamble. किसी एक ही ने बस लिखा है preamble के बारे में. What is written in the preamble? Secularism was added. Very good, Uzma. Secularism was added in 42nd amendment. है ना? अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इंडिया is secular, but India is anti-religious state. Is this correct? India is secular, but India is anti-religious state. No. Okay. False. Very good. India is secular, but India is not anti-religious state. ये किसने कहा है? ये कहा है सीरवाई ने, सीरवाई केस. Clear? Now, secularism in India is also on the principle of equality, liberty and neutrality. ये याद रखिएगा. Secularism is on the basis of the principle of equality, liberty and neutrality. इस बेसिस पर सेक्युलरिज्म की बात की गई है ना. फिर आता है उसके बाद आर्टिकल 25. क्लियर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आर्टिकल 25. नाउ आर्टिकल 25 किस चीज के बारे में बात करता है? कंसाइज, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, है ना. कंसाइज, प्रोफेस, practice and propagate, and this is available for all. Available for all. Now, if I ask you, right to convert is a fundamental right? बताइए, whether right to convert is a fundamental right or not? No. Very good. Right to convert is not a fundamental right. Clear? So there are some limitations. Some limitations. Like, अगर आप अपना रिलीजन प्रोफेस कर रहे हैं, उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. पब्लिक ऑर्डर. Clear? Health should not be affected. Morality should not be affected. Clear? And other provisions which are given in part laws. Clear? So there are various laws. Yes, it cannot force someone to convert. Clear? Laws क्या कहते हैं? Governing on non-religious aspects of a religious practice. तो laws जो है वो govern करते हैं non-religious aspect में of a religious practice. Laws are also there with respect to social reform and welfare. And laws ensures
that access to all sections of Hindus, including Buddhists, Jains, Sikh, to public Hindu religious institution. Clear? जितने भी बुद्धिस्ट जैन सिख हैं उन सभी को एक्सेस मिले हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में. ये कहा गया है सारी चीजें आर्टिकल 25. क्लियर? नाउ आर्टिकल 26. अब आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 इट टॉक्स अबाउट रिलीजियस डिनोमिनेशन. रिलीजियस डिनोमिनेशन. रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब क्या? आर्टिकल 26 कहता है it can establish and maintain institution for religious and charitable purposes. क्या आप religious denomination बना सकते हैं religious और charitable purpose के लिए? Clear? So that people can manage their religious affairs. They can acquire movable and immovable property also, and they can administer such property as per law. अभी वक्फ बोर्ड का इशू चल रहा है, आप सभी को पता होगा. पता है कि नहीं? क्लियर? वक्फ बोर्ड का इशू चल रहा है, तो कौन सा आर्टिकल इंपैक्ट करेगा? 26 भी इंपैक्ट होगा. क्लियर एवरीवन? क्लियर? नाउ रिलीजियस डिनोमिनेशन इज नॉट. अब एक चीज याद रखिएगा. डू यू थिंक रिलीजियस डिनोमिनेशन आर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इज इट डिफाइंड? नो. वेरी गुड. इट इज नॉट डिफाइंड. बहुत अच्छा लग रहा है जब आप लोग आंसर दे रहे हैं. क्लियर? ये याद रखिएगा. अब अगर हम बात करें रिलीजियस डिनोमिनेशन से रिलेटेड, तो एक केस आया था, शिरूर मठ केस. देयर वाज वन केस, शिरूर मठ केस 1954. एज पर शिरूर मठ केस, it has 3 components. First, religious denomination जो है, it is the collection of individuals having common faith. It is just like an organization. Then designation of that organization by distinct name. जैसे there are various examples. Radha Swami, Lingayat in Karnataka, Vaishnavas, Shwetambar Jains, clear? Gauda Saraswat Brahmins, Daud Bohras, all these are religious dominations. Clear? Different organization. Now, charitable and religious institutions. अब एक चीज याद रखिएगा, charitable and religious institutions comes under concurrent list. So that is why there are various central laws like Waqf Act 1995, Sikh Gurdwara Act. आपने modern history में पढ़ा होगा. That is Sikh Gurdwara Act of 1925, Akali Satyagraha. Clear? Yes, places of worship act is also in the list. Now, then apart from this, state laws are also there. अब state laws कौन-कौन से हैं? For example, Hindu Religious Endowments Act 1987 में आया. दूसरा, फिर आप लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश चैरिटेबल, है ना? And Hindu Religious Endowment Act of 1987. It is related to Andhra Pradesh. Clear? Spurs आपने लिखा है not because every religion has its own modus operandi. Yes. Clear? So places of worship act is also in the news. अब अगर मैं आपसे पूछूं, do you think that right to religion is also connected with Article 16? आपको लगता है Article 16 से connected है? बताइए. Do you think is it connected with Article 16? If you read Article 16 subclause 5, so in Article 16 subclause 5 it is mentioned laws can be made ensuring members of bodies governing religious institutions are of the same religion. It is given in Article 16 subclause 5 कि laws बनाए जा सकते हैं, ensure that state has to ensure that members of those bodies governing religious institutions, they are of same. It is given in Article 16 subclause 5. Clear? Then Article 27 क्या कहता है? Yes, very good. Hindu priests in temples, very good. Then Article 27 क्या कहता है? Article 27 कहता है no specific
taxes for promotion of maintenance of specific religion or religious denomination. Clear? कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफिक religious denomination because that is going to violate the secular fabric of our constitution. Clear? That is equal aid to all religions is not bared. ये याद रखिएगा, equal aid to all religions is not bared. And fees can be levied for a specific religion. Fees लगाई जा सकती है for a specific religion. Clear? Then Article 28 is also there. Article 28 किस चीज के बारे में बात करता है? Religious instruction और worship in education institution, है ना? अब सवाल ये है, अगर कोई fully funded state fully funded institution है तो वहां पर religious instruction दिया जा सकता है. अगर मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां पर नहीं दिया जाएगा. वेरी गुड. No religious instructions in a fully state funded educational institution. Very good. Now, अब एक और सवाल सुनिएगा, एक और क्वेश्चन समझिएगा. In case of educational institution run by state, but established under any trust or endowment, तो religious instructions दिए जा सकते हैं. Then in that case, yes, religious instruction can be imparted if the trust or endowment prescribe. अगर trust या endowment कहेगा, then religious instructions can be given. तो अभी इसी से रिलेटेड एक इशू शुरू हो गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का. दो इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना, बट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी क्या कहा जाता है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी. तो इस पे काफी इशू चल रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टेटस को वापस लिया जाए. क्लियर? सभी ने ये न्यूज पढ़ी थी ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली. ओके, वेरी गुड. क्लियर? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स. नाउ another important thing which you need to understand, that is यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी. बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है यूसीसी. Article 44. Now this Uniform Civil Code, पहली चीज, it comes under DPSP, and this is the liberal and intellectual interpretation. Liberal and intellectual interpretation. Clear? Now, अब सबसे पहली चीज याद रखिएगा, पर्सनल लॉज जो होते हैं. This personal laws comes under which list? बताइए. Personal laws comes under which list? Concurrent list, Uzma. It comes under concurrent list. Clear? पहली चीज समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फॉर यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट टाइम इन शाहबानो जजमेंट 1985. देन उसके बाद सरला मुदगल केस 1995 यूसीसी पे था. देन वैलेंटिया पेरेरा in 2019. These cases are there. Okay? Now, इसमें सबसे पहली चीज कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक आया था, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार. ये आया था 2008 में. इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है. मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी. Marriage registration compulsory. Okay. Now,
Several states have formulated laws and orders implementing the Supreme Court judgment. कुछ states, बहुत सारे states ने Supreme Court की इस judgment को laws बनाया और implement किया. Clear? इसी के साथ ही साथ ये भी इसमें लिखा हुआ है minimum age to marry, that is 21 for men और 18 किसके लिए? विमेन के लिए. क्लियर? ये किसमें लाया गया है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. दिस कम्स अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006. क्लियर? अब एक सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है that is related to the live-in relationships, and this is built through Supreme Court judgments. Clear? अब समझिए लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में क्या. राइट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीजें कहा? राइट टू कोहैबिट विदाउट मैरिज फॉर कंसेंटिंग अडल्ट्स अबव 18 years. Now, women who are in live-in relationships, they are entitled to protection under the Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005. अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में है, she is also protected under the Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005. Okay. Now, another important thing, right to maintenance of women in live-in relationship under certain condition. Clear? That means right to maintenance to women in live-in relationships also under certain conditions like significant cohabitation period, then monogamous relationship है अगर, partners of legal marriageable age, अगर दोनों partners legal है marriageable age के, then consensual relationship resembling the marriage. इन सभी चीजों में there is right to maintenance to women in live-in relationships. Clear? अब what if children or child born in live-in relationship, whether that child have property rights? तो अब समझिएगा, yes, children born from live-in relationship, they have the property rights and they are considered as legitimate. And apart from this, low inheritance right to each other property unless jointly acquired. लिव इन रिलेशनशिप में इनहेरिटेंस राइट नहीं होगा एक दूसरे की प्रॉपर्टी में जब तक जॉइंटली एक्वायर नहीं कर. क्लियर? दीज आर द थिंग्स विच आर गिवन इन दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो बिल आए हैं, उसमें इन सभी चीजों के बारे में बात किया गया. क्लियर एवरीवन? आज पूरा समझ में आ गया क्या क्या चीजें हैं न्यू बिल में. Now if they ask question in prelims, you will be able to है ना, you will be able to take correct answer. Okay. Yes, Uzma, it has to register, which raises the issue of privacy in Article 21. Yes, that comes under the loopholes. Okay, that you can write in the mains examination. That's not an issue. But for prelims, these things are important. Clear? Okay. Now, apart from this, so today we have discussed three important topics: criminal justice, then cultural minorities, UCC and all, and then we have discussed this child and exploitation. Then let me tell you some important topics. As you can see here on your screen, there are some important topics for polity for prelims 2025. Static topics आपको किस पर focus करना है? Preamble, जितने भी meaning है keywords के, constitution, parts and schedule, historical background of constitution, that is constitutional act from regulating act to government of India act 1935. Then fundamental rights, specially focus on article 21 because UPSC ने बार बार यहाँ से question पूछे हुए हैं. Then DPSP, then major constitutional amendments. So अभी हमने जो discuss किए हैं पिछले 2 दिनों में. Then parliament and state legislature plus passing of bill and budget. Then present governor. So these are some static things, है ना, ये जो आप रिवाइज करते हो. करंट से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, that is this. So new criminal laws we have already discussed, है ना. न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. क्लियर? सो दिस वी हैव ऑलरेडी discussed.
Then we have discussed yesterday सब classification, 6 schedule, reservations के बारे में discuss किया, UCC के बारे में discuss किया, है ना? So these things we have already discussed. So remaining things we are going to discuss in the next class. So tomorrow will be our last class of quality prelims current. So we will be completing each and everything. And then after tomorrow, there will be 2 days history important class, that what are the important topics, which aspects are important for your prelims examination. Clear everyone? तो कल तक पॉलिटी चलेगा, देन 2 दिन सैटरडे एंड देन मंडे यू विल बी हैविंग हिस्ट्री, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रीड इन हिस्ट्री. क्लियर एंड इंपॉर्टेंट एरियाज. क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है सभी को? ओके. So now I am going to wind up this session. Okay, so tomorrow we'll meet at the same time. Okay, so thank you and all the best. Good night.